Hello, children. Good morning. Let's start our science period. Let's know about the new things of human body, the new organ system. Okay, we have already learned about the digestive system, respiratory system, skeletal system. Today we are going to learn about the excretory system. This is also one of the most important organ system. Okay, it is in your book, page number 77. An excretory system consists of kidneys, ureters, the bladder, and the urethra. Let me show the picture of the excretory system. Here you can see. This is the kidney. This bean-shaped structure is called kidney. राजमा का जैसा shape है ना इसका, bean-shaped structure, and it is very important organ of human body. Here urine is formed. Urine क्या होता है बेटा? Waste material. Waste होता है ना हमारे body का जिसको हमको बाहर निकालना होता है. This is formed in the kidney. Okay, and from the kidney, and how many kidneys are in our body? A pair. एक जोड़ा, number 2, 1 and 2. A tube-like structures coming out, that is called ureter. ये देख रहे हो? From one ureter tube, this tube is called ureter. And ये blood vessels है. पीछे क्या है? ये सब blood vessels है हमारे body के. And from the urine which is formed in the kidney, it passes through this ureter. इन यूरेटर से निकल के कहाँ पे कलेक्ट होती है? दिस ब्लैडर. ये थैली होती है ब्लैडर जिसको कहते हैं. दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर. ब्लैडर, इसमें यूरिन कलेक्ट होता है और ये ब्लैडर हर पल ड्रॉप इसमें यूरिन कलेक्ट होता रहता है. एंड व्हेन इट फिल्ड, और जब ये फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है, देन इट पुल्स अप प्रेशर, और ये एक प्रेशर प्रोड्यूस करता है. एंड वी फील, हमको यूरिन फील होती है, एंड वी गो टू एक्सक्रीट इट. एंड द हियर यू कैन से द ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेथ्रा. व्हाट इट इज कॉल्ड? यूरेथ्रा. थ्रू दिस यूरेथ्रा, this urine is passed out through the body. Okay, then how many organs together form the excretory system? The kidney, ureter, bladder and urethra together form the excretory system. The excretory system consists of a pair of kidney, ureter, the bladder and the urethra. And what is the use? It removes the waste product in our body. जो वेस्ट होता है उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालते हैं. हाउ? द किडनीज मेक यूरिन विच इज कैरीड आउट. जो कि कौन कैरी करता है? यूरेटर. यूरिन कहाँ बनता है? किडनी में बनता है. एंड इट इज कैरीड आउट बाय यूरेटर टू द ब्लैडर. कहाँ पे इकट्ठा होता है? ब्लैडर में. एंड passed out through the urethra. और यूरेथ्रा से ये होते हुए बाहर चला जाता है. Children, you know, the lungs and the skin also removed waste from the body. Lungs क्या waste body से निकालता है? The lungs release carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लंग्स बाहर को एक्सक्रीट करता है. एक्सक्रीटरी मतलब एक्सक्रीट करना. एक्सक्रीट द कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालता है? लंग्स. एंड द स्किन रिमूव्स द स्वेट मतलब पसीना फ्रॉम द बॉडी. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, स्वेट है, यूरिन है, these all are the waste which are given out through the body through the system which is called excretory system. Okay children, I have shown you the model of that system na? In our previous class you have seen the model of excretory system. You have, of course children, the another important system of the human body is reproductive system. Reproductive system means to reproduce, the system which help to reproduce the babies, to produce the babies. Human being है
वो अपने जैसा बेबी प्रोड्यूस कर लेते हैं ना। तो कौन सा ऑर्गेनिक सिस्टम इसमें हेल्प करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट इज द यूज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम? It helps to produce the babies. When you will grown up, you will read the detail of this system. जब आगे बड़े क्लासेस में आप जाएंगे, then you will read in detail. Let's sum up the children. Sum up the lesson. चलो इस लेसन को हम लोग देखते हैं क्या क्या हमने इसमें पढ़ा. Our body is made up of different organs. हमने क्या जाना? Our body is made up of different organs. हमारी बॉडी डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बनती है. Eyes, nose, hands, stomach, lungs, brain, they all are the different organs. When they all join together, they make a human body. And what is organ system, beta? An organ system is formed by a group of organ. और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं तो उनको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. एंड वाई, क्यों बनाते हैं? दे वर्क टुगेदर. वो एक साथ काम करते हैं टू कैरी आउट एन एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, द स्टमक, the large intestine, food pipe, mouth, small intestine, liver, these all are organ. When these all join together and make an organ system, that is called digestive system. And why they make the digestive system? To digest the food which we eat. Okay, now you have understand. Just like that, lungs, windpipe, हाँ, वो एक साथ, एंड नोज, ये तीनों ऑर्गन मिल गए तो कौन सा सिस्टम बना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. यस चिल्ड्रन, एंड द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी आर स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम किससे मिलके बना था? बोन्स. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम गिव शेप एंड सपोर्ट एंड कीप शेप द सम इंटरनल ऑर्गन. हार्ट और ब्रेन जो है वो स्केलेटल के अंदर जो है सेफ होके रखे होते हैं ना. एंड द मस्कुलर सिस्टम is made of muscles and it helps in the movement. It joins with the bones and it helps in the movement of bones, our body. Respiratory system helps in the process of the respiration. Digestive system helps in the process of digestion of food. Circulatory system, the circulatory system helps in the distribution of carry out the blood throughout the human body through the blood vessels. जो हम खाना खाते हैं, डाइजेस्टेड फूड, ये सब कुछ किससे कैरी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस, थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. दे आर सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी. एंड नर्वस सिस्टम, वी फील, हम जो कोई चीज सेंस करते हैं और हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है. ब्रेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज नर्वस सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि वेस्ट को प्रोड्यूस बाहर निकालता है ना. Kidneys are the example of, are the main organ of the excretory system. And the reproductive system, which helps in the production of the same kind of babies. हमें अपने जैसा बॉडी बेबी प्रोड्यूस करने में कौन सा और सिस्टम मदद करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. और फूड का ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं. और ब्लड का क्या यूज होता है? ब्लड कैरीज फूड, वाटर, गैसेस एंड द केमिकल्स नीडेड बाय आवर बॉडी. इसको एक जगह से दूसरी जगह में कैरी करने में मदद करता है ना. एंड द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी. ब्रेन इज द कंट्रोलिंग ऑर्गन ना. नाउ चिल्ड्रन, come to the book exercise. Take the correct option. It is in book page number 78. Let me know how you have learned. चलो हम लोग इसको एक साथ मिलके सॉल्व करते हैं. Let's solve together. We have to put a tick mark. जो सही होगा वहां पे हम क्या लगाएंगे? एक टिक मार्क लगाएंगे. The place where two or more बोन्स मीट, जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? मसल्स? नो. जॉइंट? यस. व्हाट वी कॉल इट जॉइंट. हम इसको क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं ना. हम इनको क्या कहते हैं? जॉइंट. द राइट वन इज जॉइंट. यू टिक ऑन द जॉइंट.
And come to the another one. Muscles are attached to the bones, nerves और blood vessels. Muscles किससे joint होती हैं बेटा? Of course, bones. Muscles किससे joint होती हैं? Bones से. Which is the right answer? Bones. You tick on the bones. Come to the another one. That is the organs that are a part of the respiratory system. The lungs, the pancreas, the kidney. Which organ is the part of respiratory system? Of course, lungs. Lungs are the part of respiratory system. You will take on the lungs. Come to the another one. That is the organs that are not a part of excretory system. Excretory system का part नहीं है. The ureter ये तो है. The nerves, the kidneys, kidneys तो है. Which is not the part of excretory system? Of course, the nerves. The nerves are the part of which system? Nervous system. Come to the another one, dear. Blood goes to the different part of the body through. Blood किससे हमारे बॉडी में कैरी होता है? स्पाइनल कॉर्ड से? नो. नर्व से? नो. इट कैरीज थ्रू ब्लड वेसल्स. किससे कैरी होता है बेटा? ब्लड वेसल्स से ना. ओके. Then what were the right answer? The place where two or more bones join together is called joint. Muscles are attached to the bones. The organs that are the part of respiratory system are the lungs. The organs that are not a part of excretory system, nerves. Blood goes to the different part of the body through blood vessels. Okay, come to the another page. Another book exercise. What we have to do here is strike out the name of the organ that does not belongs to organ system. Children, 1, 2, 3, 4. These are the name of organ system. ये चारों organ system के name है. And these are the name of organ. ये पहले वाली लाइन में जो organs के name लिखे हैं ये कौन से system के हैं? Digestive system के. But one organ ऐसा है जो नहीं है, which is not belongs to this system. हमको उसको find out करना है. Okay, children? We have to find out the organ which is not the part of number 1. चलो करते हैं. Digestive system का part नहीं है. Stomach है. Mouth, yes. Nose, of course. Nose is not the part of digestive system. कौन सा organ नहीं है digestive system का part? Nose. Small intestine तो है. Yes, और small intestine है. Come to the next organ system. Circulatory system. Circulatory system किससे मिलके बनता है? Heart, blood and blood vessels. तो कौन सा organ नहीं है? Of course, brain. Brain is not the part of circulatory system. Okay? Come to the next one, beta. Respiratory system. अब कौन सा organ respiratory system का नहीं है part? Nose, nerves, lungs, windpipe. Nose, lungs and windpipe, they join together and make the respiratory system. Nerves are not the part of respiratory system. Okay? Come to the another one, beta. That is excretory system. Excretory system का कौन सा part नहीं है? कौन सा organ नहीं है? Kidneys, ureter, urethra, mouth. Kidneys, ureter and urethra, these three together form the excretory system. तो कौन सा नहीं है? Of course, mouth. Mouth is not a part of excretory system. Mouth is a part of which system? Digestive system. चलो आगे देखते हैं. Write short answer. We will write the short answer in the notebook. Okay, children? I will share the answers, these answers in your notebook. You will write these. Yes, this I have done for you. Already we have completed.
and this one we have completed. Okay, come to this. Children, this is the notebook work. I am going to share the notebook work where the short questions are there. You have to write in your science notebook. You will start from new page. Defined words already you have written. From the next page, you will write these question answer. You will get these question answer in the document form, in the word form, PDF form, where in your Edunex app, e-content in the chapters, the human body. This time I am going to share, I am just explaining you that what is the question and what will be the answer. Okay? You will write the name of the lesson, leave 2 lines, and you will write. One time you have written the name of the lesson, then no need to write again and again. You write B and write short answer. This heading you will put, leave 1 line, then you will write question number 1. What is the role of skeletal system? Skeletal system का role क्या होता है? The skeletal system provides shape and support to our body. हमारे body को shape और support देता है. And it also protect important internal organs such as heart, lung and brain. ये skeletal system बॉडियों के अंदर सुरक्षित होते हैं ना. हर्ट कहाँ पे? जो केज होता है उसमें सुरक्षित होता है ना. लंग्स में सेफ होता है एंड ब्रेन हमारे स्कल में सेफ होता है. यस, यू कैन राइट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट जो मैं करूंगी आपको शेयर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम मेड ऑफ? द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्लड, heart and blood vessels. Children, it is very important to understand the answers. When you will understand that what it is asked and what will be the right answer, that no need to memorize again and again. अगर आपने बात को समझ लिया है तो definitely you will be able to write whenever the question will be asked to you. What is the role of nervous system? Answer 3, the nervous system controls all the activities of our body, such as walking, talking, thinking, and learning and hearing. These all activities are controlled through the nervous system. And what are the organ of nervous system, beta? Brain, spinal cord, nerves, these are the organ of nervous system, na? Okay? You will write these 3 questions from the new page in your notebook, okay? And you will find out आपको Edunex app पे you can get these 3 questions. Write neatly. And children, this time today you don't have to draw any diagram. You have to draw the diagram. In our next class we will do the long question answer. In front of the long question answer we will make the digestive system, respiratory system. But today you need to make any diagram. What is the today's work? Today's homework? You complete this question answer in your fair notebook. Children, when I will take the class through Zoom app, I will ask you to show your notebook. I will see there whether you have written this or not. I can take the name of any children and I will ask, just you show your notebook and you have to show at that time, and book exercises same time also. Then whenever you come for Zoom classes, be with your book and notebook because I will ask to show you at that time. Children, so today's work you complete. And what will be the next class? What we will do? A very interesting thing we will do in the next class. We will make the model of breathing system. Breathing system का हम लोग model बनाएंगे. And we will complete the other book exercises and we will write the long question answer. Okay, children, for making the model of breathing system, what we need? आप फ्रूटी पीते हो तो स्ट्रॉ से पीते हो ना. We need 2 straw. आप क्या क्या सामान कलेक्ट करके रखोगे? 2 straw and 2 balloons. 2 balloons, 2 straw, 1 sellotape and a small scissor. These 4 things आप कलेक्ट करके रखोगे. These are mentions in your book page number 77 में ये चारों चीजें आपको
यहाँ पे लिखी हुई है, this picture you can see. We will make this model. ये वाला जो मॉडल है ये हम लोग बनाएंगे. ओके, स्ट्रॉ, balloon, sellotape and scissor. You will keep these all things and we will make the model of the respiratory system. And I will tell you also about the working model of respiratory system. उसका भी वीडियो भी मैं शो करूंगी. हाँ, so children, be ready, wait for your next class and complete your today's work. Okay children, what is today's work? Complete the question answer. Define you all have written and complete the whatever book exercises we have done today. You complete that book exercises, short question answer. Okay, meet you soon in the next class. Bye bye children, meet in the next class.